स्वागत है आप सभी का हमारी 20% सीरीज में। आज का है इवनिंग का लेक्चर नंबर 12 और इसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका है आज लेक्चर नंबर 3। और आज हम इसमें देखने वाले हैं अलग अलग सेल, और अलग अलग सेल में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं लीड एक्यूमुलेटर, और इसको कहते हैं हम लीड स्टोरेज बैटरी। अब ये जो लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज बैटरी है, इस लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ये जो सेल है, कौन सा लीड एक्यूमुलेटर, इट इज अ सेकेंडरी सेल। अब किसको कहेंगे सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल मतलब वो सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेल को हम कैसे सेकेंडरी सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड रिचार्जेबल सेल। इस सेल को हम कहेंगे बच्चों रिचार्जेबल सेल, or we say it is a which cell? Secondary cell. Now after having this rechargeable cell or the secondary cell, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। What is this rechargeable cell or secondary cell? आप सभी जानते हो बच्चों कि जब हमारे घर पे बैटरी खत्म हो जाती है तो हम उसकी क्या करते हैं? चार्जिंग। तो जिस बैटरी की चार्जिंग कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिचार्जेबल और सेकेंडरी सेल, और जिसकी चार्जिंग नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं, जिसकी चार्जिंग नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल जैसे हमारे वॉच के वगैरह जो सेल होते हैं, यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो उन सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। जिसको रिचार्ज कर सकते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, दैट इज द लीड एक्यूमुलेटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीड स्टोरेज बैटरी। इसी को हम लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ये जो लीड एक्यूमुलेटर या लीड स्टोरेज बैटरी है बच्चों, इसमें एक होता है कंटेनर। सो इट हैज वन ऑफ द कंटेनर, और ये जो कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर काय का बना होता है? ये कंटेनर एसिड प्रूफ कंटेनर होता है, और इसके अंदर ऐसी प्लेट्स रखी होती है। सो वी हैव दिस इज द acid proof container, and this acid proof container have the different plates, and these there are the two types of the plates are present into them, ठीक है। अब ये दो तरह की प्लेट है, and this is the acid proof container, ध्यान रखेंगे, it is the acid proof container, it is the acid proof container, यह है acid proof container। And as it is the acid proof container we have, इसमें दो तरह की प्लेट्स हैं। इसके अंदर भरा हुआ है H2SO4, it is filled with H2SO4, and as it is filled with H2SO4, तो यह है concentrated H2SO4। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है। एक है बच्चों लीड प्लेट, दीज आर पीबी प्लेट, दीज आर द लीड प्लेट कोटेड विथ PbO2, यह है लीड प्लेट कोटेड विथ PbO2, ठीक है। और दूसरी है लीड प्लेट कोटेड विथ स्पॉन्जी लीड। तो हम पहली वाली जो ले रहे हैं, ये समझो लीड प्लेट coated with Pb, lead plate coated with Pb, lead plate coated with Pb जो है वो पहली वाली प्लेट्स है, और दूसरी वाली जो प्लेट्स है, these are the lead plate coated with PbO2। These are the lead plate coated with lead, these are the lead plate coated with lead। अब these are the lead plate coated with lead, and these are the concentrated H2SO4। अब ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये यहाँ पे ऐसी अटैच्ड है इधर, और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये ऐसी इधर अटैच्ड रहेगी। So one is connected to the
अब इसमें देखो पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और पीबीओटी कोटेड विथ, these are the lead plate coated with PbO2, कोटेड विथ लीड ऑक्साइड, या हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे PbO2। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, और फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड। तो जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड, और जिसपे रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड। और इसीलिए ये जो पीबी प्लेट्स है, दैट पीबी प्लेट्स एक्ट्स एज एनोड एंड PbO2 प्लेट्स एक्ट्स एज कैथोड। और इसके अंदर भरा हुआ है ये क्या, H2SO4, 38% H2SO4 इसके अंदर भरा होता है, 38%। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस H2SO4 इज 1.2 ग्राम पर ml। इसकी उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। 5 to 7 points you have to keep in your mind. First, take one of the acid-proof container, and two types of the lead plates are immersed into this acid-proof container. A lead plate coated with spongy lead, मतलब sponge-like lead, and is connected to the or can act as a anode, and the lead plate coated with PbO2 can act as a cathode. So one is acts as an anode and another is acts as a cathode. These are the lead plate coated with PbO2. After having this, दो चीजें अभी हमने यहाँ पे देखी है। So one is anode, another is cathode. That is the secondary cell, or we can say it is the rechargeable cell. And this is the concentrated H2SO4. ठीक है। सो अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। दिस इज द सेकेंडरी सेल और रिचार्जेबल सेल। अब हम चलते हैं, दो तरह की रिएक्शन यहाँ पे होगी व्हेन इट एक्ट्स एज अ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि जब वो चार्जिंग करेंगे तो बैटरी की एनर्जी काय में कन्वर्ट होंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तब वो कौन सा सेल है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तब वो केमिकल एनर्जी का प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो इट विल बी इलेक्ट्रिक व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अब क्या हो रहा है, अब वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, सो इट विल बी अ गैल्वेनिक सेल। तो जब ये गैल्वेनिक सेल करके एक्ट करेगा तो वर्किंग व्हेन इट एक्ट्स एज अ व्हिच सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, व्हेन एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल, एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल, जब ये गैल्वेनिक सेल करके एक्ट करेगा तब क्या होगा, अब हम इसको देखेंगे। So when it acts as a galvanic cell, a special thing occurs here. ठीक है, जब ये गैल्वेनिक सेल करके एक्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, आप सभी जानते हो कि when it acts as a which cell, गैल्वेनिक सेल, तो ये गैल्वेनिक सेल करके एक्ट होगा तो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि दिस लीड प्लेट एंड दीज आर द PbO2, तो ये Pb का पहले ऑक्सीडेशन होगा, एंड ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, तो इसीलिए हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड करके कौन एक्ट कर रहा है, Pb, और ये गैल्वेनिक है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव, मींस इट विल बी अ व्हिच इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड इट विल बी अ व्हिच इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो सबसे पहले you know Pb has a tendency to donate 2 electron, so first it forms Pb dipositive with the removal of 2 electron, and H2SO4 is a strong acid, so it dissociate to form H positive and SO4 dinegative, twice H positive SO4 dinegative, large number of H positive and SO4 dinegative ions will be present in the solution. So what happened, this Pb dipositive combine with SO4 dinegative and it combines to form PbSO4. If you add these two, that Pb dipositive ions will get neutralized and you get Pb plus SO4 dinegative. It combines to form PbSO4, that is the lead sulfate.
with the removal of how many electron? 2 electron. So in this way there will be a reaction when it acts as a galvanic cell, और discharging भी हम इसको कहते हैं, and this is the oxidation half cell reaction. Next is the reduction half cell reaction when acts as reduction half cell reaction when acts as cathode. कैथोड में क्या होगा? सबसे पहले तो ये PbO2 है, that PbO2 will completely dissociate to form Pb4 positive twice ODI negative. This Pb4 positive plus accept 2 electron and get converted into Pb di positive. This Pb di positive combine with SO4 di negative and it forms the PbSO4, and that 4H positive, क्योंकि ये भी SO4 यूज हुआ, ये भी SO4 यूज हुआ, कितने SO4 यूज हुए? दो. एक SO4 प्रोड्यूस करता है 2H पॉजिटिव, तो 2 SO4 प्रोड्यूस करेंगे 4H पॉजिटिव, एंड O डाई नेगेटिव तो है. This twice O di negative plus 4H positive combine to form twice H2O. ठीक है. अब हम इसको बैलेंस करने के लिए 2O डाई नेगेटिव गेट कैंसल, Pb डाई पॉजिटिव गेट कैंसल, Pb4 पॉजिटिव गेट कैंसल. नेक्स्ट what remains here? Only PbO2 plus 4H positive plus SO4 di negative plus 2 electron. It forms PbSO4 plus twice H2O. This is the reduction half cell reaction. After writing this oxidation half cell reaction and reduction half cell reaction, we write net cell reaction. We write here the net cell reaction. In the net cell reaction, first we write oxidation half cell reaction. What is oxidation half cell reaction? This is the Pb plus SO4 di negative. It gives PbSO4 plus how many electron? 2 electron. Next is the reduction half cell reaction. So what we have? That PbO2 plus 4H positive plus SO4 di negative plus 2 electron gives PbSO4 plus twice H2O. So this SO4 di negative, SO4 di negative and 4H positive, I write combinedly it as a twice H2SO4. This SO4 and 4H positive. Combinedly I write it as a twice H2SO4. And here we have, this is the Pb solid plus PbO2 plus twice H2SO4. It gives twice PbSO4 plus 2 electron get cancelled and twice H2O. This is the net cell reaction at the time of discharging. ठीक है. तो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग व्हेन. अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि क्या हो रहा है. H2SO4 यूटिलाइज हो रहा है एंड इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4, और H2SO4 यूटिलाइज हो रहा है तो उसके अंदर का सॉल्यूशन है 38% है, तो उसमें क्या जो वेट ऑफ H2SO4 है वो कम होती जाएगा, और इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएंगी? कम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, तो इसीलिए डेंसिटी कम होती जाएंगी. और अगर उसकी डेंसिटी कम होती गई तो क्या हो गया? वेन उसका डेंसिटी कम होती जाती है, जो 1.2 ग्राम पर ml थी वो जब 1.17 के नीचे चली जाती है तो देयर इज अ नीड टू रिचार्ज द सेल. वेन डेंसिटी ऑफ H2SO4 falls to 1.17 gram per ml. When density of H2SO4 falls to 1.17 gram per ml, then when density of H2SO4 falls to 1.17 gram per ml, then
there is need, there is need, ठीक है. When the density falls to 1.17 gram per ml, then there is need to recharge, to recharge cell, to recharge cell by providing potential, by providing potential greater than, by providing potential greater than cell EMF, by providing potential greater than cell EMF. और तब क्या हो जाता है, रिएक्शंस रिवर्स. मतलब एनोड पे जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पे क्या होगा, रिडक्शन. एंड नाउ इट विल एक्ट एज विच सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल ईएमएफ. एंड नाउ it will acts as, when the density of H2SO4 falls to 1.17 gram per ml, then there is a need to recharge the cell by providing potential greater than cell EMF. And now it will acts as a, now it will acts as a electrolytic cell, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल करके क्या होगा, एक्ट होगा. एंड ऑल सेल रिएक्शन रिवर्स, सारी सेल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स. और इसीलिए एनोड का कैथोड हो जाएगा, कैथोड का एनोड. तो इसलिए चार्ज तो वही रहेंगे, इसलिए हम बोलते हैं अपोजिट चार्जेस है. निगेटिव है, निगेटिव रहेंगे. पहले वो एनोड था, अब वो कौन है, कैथोड. अब वो इलेक्ट्रोलिटिक का कैथोड है, तो इट कैरी विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज. देयरफॉर ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड. अब एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. किसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर था, कैथोड के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज. अब ये रिएक्शन डायरेक्टली रिवर्स होंगी. क्या होगा, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O फॉर्म PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब उसी तरह होंगी रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज. और रिडक्शन होंगी दैट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव. ठीक है. अब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल, PbSO4 प्लस PbSO4 twice PbSO4 plus twice H2O. It forms PbO2 plus 4H positive plus twice SO4 di negative. That will be the reverse reaction. PbO2 प्लस Pb रह गया प्लस Pb. इस तरह से जो टूटा हुआ PbO2 था वो फिर से रीजनरेट होते जाएगा, Pb फिर से रीजनरेट होते जाएगा और फिर से क्या रीजनरेट होते जाएगा, H2SO4. So this is the first cell we have, that is the which cell, H2 what, that is the 38% 1.2 gram per ml. And this is the secondary cell we can have. Which cell, secondary cell. और इसका जो सेल का EMF है, इस सेल is about 2.0 volt. इस सेल is about 2.0 volt. So this is about the first cell we have, that is the which cell, that. अब इसमें दो चीजें हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन. ठीक है, हो गया. इसमें एक टॉपिक हम थोड़ा सा ले लेते हैं पोटेंशियल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारे पास दो तरह के हैं. पोटेंशियल, टू टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल्स वी हैव. एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको डिनोट करेंगे ई, मतलब पोटेंशियल ऑक्सी है तो ऑक्सी। लेकिन व्हेन टेम्परेचर 298 केल्विन, pressure 1 atmosphere, and concentration of ion is 1 molar. This is called standard condition. This is called standard condition. And under the standard condition जो potential रहेगा, that is called standard potential. और इसीलिए E0 ऑक्सीडेशन, E नॉट ऑक्सीडेशन भी हम उसको बोलते हैं, दैट E0 ऑक्सीडेशन इज, जीरो मतलब स्टैंडर्ड, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन, एंड E मतलब पोटेंशियल। सेम कंडीशन वी हैव E नॉट रिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। So we can have the two types of potentials here. One is the standard oxidation potential and another is a standard reduction potential. So as we have the two types of the potential here, one is the standard oxidation potential, another is a standard reduction potential, and from that you can have E cell, क्योंकि एक सेल में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। So this is anode and this is cathode. So एक सेल में एक है एनोड और एक है कैथोड। One is connected to the positive terminal, another is connected to the negative terminal. As one is connected to the positive terminal, another is connected to the negative terminal. One is anode and another is cathode. तो E0 सेल, एनोड पे हमेशा ध्यान में रखना है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। और इसीलिए E0 सेल अगर हमें निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस कैथोड पे होता है रिडक्शन, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। So this is the one basic formula we have for oxidation and reduction potentials. But one thing always keep in your mind, for any element, कोई भी एक एलिमेंट के लिए value of oxidation potential and reduction potentials are same, only their signs are opposite. For any element, value of ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टैंडर्ड बोल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर सेम, ओनली देयर साइन आर अपोजिट, साइन आर अपोजिट। एग्जाम्पल, E0 जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn डाइपॉजिटिव। ये इंडिकेट करता है कि मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब जिंक का कन्वर्शन Zn डाइपॉजिटिव में हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn डाइपॉजिटिव मींस इट इज डोनेटिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सो E0 is converted into Zn dipositive. This means to say that it is undergoing oxidation. As it is undergoing oxidation, so E0 of zinc is converted into Zn dipositive. And this is the E0 oxidation. This is the E0 oxidation. This is the E0 oxidation of zinc, and its value is plus 0.763 volt. But if I write the reaction like that, E0 of Zn dipositive into Zn, not into slash Zn, means Zn dipositive is converting into the Zn, means it is undergoing reduction, and so it can be written as
E0 reduction of zinc, and it is minus 0.763 volt. So value of oxidation potential and reduction potential for any metals are same, only their signs are opposite. And so from this I can write E0 oxidation of zinc is equal to minus E0 reduction of zinc. Value of E0 oxidation and reduction will be same, only their sign will be opposite. Only their sign will be opposite here. So E0 oxidation of zinc is equals to minus E0 reduction of zinc for any element. For any element we can have. E0 oxidation of zinc is equal to minus E0 reduction of zinc for any element. Value of standard oxidation and reduction potentials are same, only their signs are opposite. That is very important. And so जैसे हम गैल्वेनिक सेल में अगर देखेंगे तो जिंक एक्ट्स एज अ डैनियल सेल में जिंक एक्ट्स एज अ एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज अ कैथोड, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दो नए फॉर्मूले बनते हैं कि अगर मैं डैनियल सेल के लिए अगर लिखूं, फॉर डैनियल सेल अगर मैं लिखूं, तो अभी मैंने बताया कि जिंक इज एनोड, तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा? E0 oxidation of anode. Anode is zinc plus E0 reduction of cathode. Cathode is copper. But E0 oxidation of zinc is equal to minus E0 reduction of zinc plus E0 reduction of copper. So I can write the formula E0 reduction of copper minus E0 reduction of zinc. That is, copper is a cathode. E0 reduction of cathode minus E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode. So we have this is E0 cell. So we can have the formula here, E0 cell is equals to E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode. E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode. This gives you the formula of E0 cell. And generally what? Given values are of reduction potential. Therefore, E0 value, E0 दिया है, मतलब it is the E0 reduction. ठीक है? But if you write in terms of oxidation potential, in terms of reduction potential, formula is cathode minus anode. But in terms of oxidation potential, formula is anode minus cathode. And so we get here the formula E0 cell is equals to E0 oxidation of anode minus E0 oxidation of cathode. This is the formula of E0 cell. And in between the standard potential and cell potential, at the very starting we have seen what is the difference between the standard potential and cell potential. So it is found that E cell is equals to E0 cell minus 2.303 RT upon NF log of Q to the base 10. Okay? Now as we have this is where R is this is called Nernst equation. This is called Nernst equation. And we have R is equals to 8.314
Joule per Kelvin per mole. T is the temperature. N is the number of moles. And F is the Faraday. What is the value? 965000 coulomb. This is Faraday. 965000 coulomb. ठीक है? That 965000 coulomb ये हो गया Faraday. And after having this, Q की जो वैल्यू होती है, Q is given by concentration of product upon concentration of reactant. Concentration of product upon concentration of reactant. If I have the any reaction, AA plus BB gives CC plus DD. For this reaction, Q is given by concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, and concentration of B to the power B. Only the concentration of solid is equal to concentration of liquid is equal to 1. And for gas, we consider pressure. We consider pressure. Keep in your mind. For gas, we don't consider the concentration, we consider the pressure. This is about the which potential? Cell potential. And this is the relationship between that. And if you put the value here, if you put the value of Faraday की value 96500, R की value 8.314, and the temperature 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin. So 2.303 R 8.314, temperature 298 Kelvin, and F is a 96500 coulomb, and only the N remains. That what is N? Number of number of moles of electron transfer. Number of moles of electron transfer in half cell reaction. हाफ सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इस सब का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट कम्स आउट टू बी 0.0591 अपॉन n. तो ये अगर मैंने उसमें पुट किया तो वी गेट हियर द फॉर्मूला फॉर द ई सेल. तो ई सेल का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 upon n log of q to the base 10. This is the formula for the cell potential. As this is the formula for the cell potential, E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon n log of q to the base 10. So we have, this is the formula for the which potential? Cell potential. After having this is the formula for the cell potential, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. We have this is E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon n log of q to the base 10. ठीक है? Next. अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ. As we have the E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon n. Under the equilibrium condition, क्या होता है अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन? जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है, और इसीलिए सेल पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? जीरो. सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है, एंड ये जो Q है जिसको हम रिएक्शन क्वोशंट कहते हैं, Q इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशंट. रिएक्शन क्वोशंट, Q इज अ रिएक्शन क्वोशंट. और ये जो रिएक्शन क्वोशंट है, रिएक्शन क्वोशंट
जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, एंड दैट के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। That K is called equilibrium constant, and so we can have the formula here. अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, ई सेल की वैल्यू हो गई जीरो। दिस इज द ई जीरो सेल माइनस 0.0591 upon n. N is the number of moles of electron transfer, q k to the base 10. And so you get here the formula E0 cell is equals to minus का plus 0.0591 upon n log of k to the base 10. इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, बट इफ द टेम्परेचर इज नॉट 298 केल्विन तो यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लस 2.303 RT upon NF log of k to the base 10. This can be a formula for the cell potential, or we can say the standard cell potential. Clear? So again we have the one energy that is called Gibbs free energy. We know in our body there is an energy which can be converted into useful work. That energy is called Gibbs free energy. What do you mean by the Gibbs free energy? The maximum amount of energy available in the system. The maximum amount of energy available in the system which can be converted into useful work. Gibbs free energy. It is denoted by G. अब जब डेल्टा G निगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, चली जाती है कूद होके, फाइनल एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए G2 माइनस G1 निगेटिव होता है। और जब डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और जब डेल्टा G जीरो होता है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. So in this way we have the two types of the processes. One is a spontaneous, another is a non-spontaneous, and third one is in equilibrium. So we have the three types of processes: spontaneous, non-spontaneous and equilibrium. अब डेल्टा जी में जितना वर्क में डिफरेंस, डेल्टा जी में जितना डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी वो काय में कन्वर्ट करेगा? वर्क. And so that delta G is equal to work. सिर्फ साइन अपोजिट रहेगा, क्योंकि यहां से जा रही है तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव, लेकिन उधर वर्क हो जाएगा. अब जब इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एक मोल गए तो कितनी होती है? 1 फैराडे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एफ इंटू ई सेल. इन तीनों को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. एंड सो देयर इज वन रिलेशन डेल्टा जी, दैट इज कॉल्ड व्हिच वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क. That is called electrical work, and it is given by delta G is equals to minus NF E cell. So electrical work is denoted by delta G, and delta G is equals to minus NF E cell. So keep in your mind, we have this is the formula minus NF E cell. This is the which work? Electrical work. So keep in your mind, this electrical work is given by delta G is equals to minus NF E cell. This is the which work? Electrical work. Getting? That electrical work is delta G is equals to minus NF E cell. Under the standard condition, it is given by delta G0 is equals to minus NF E0 cell. So this is the electrical work. In this way, we have seen the cell potential, standard cell potential, Nernst equation, electrical work, and how to find out the potential. ठीक है? अब after discussing that different types, this thing, we see here the next cell, that is called which cell? Dry cell. अभी हम नेक्स्ट टाइप का सेल यहाँ पे दिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कौन सा सेल?
ड्राई सेल. सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस ड्राई सेल. ड्राई सेल को दूसरा एक साइंटिस्ट जी ने दिया था, उनका नाम है लिक्लैंच. तो इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्लैंच सेल. ठीक है. तो ड्राई सेल और लिक्लैंच सेल अभी हम देखने जा रहे हैं. सो वी हैव द नेक्स्ट सेल दैट इज ड्राई सेल और लिक्लैंच सेल. लिक्लैंच सेल और लिक्लैंच बैटरी भी हम उसको बोलते हैं. ये प्राइमरी सेल है. प्राइमरी का मीनिंग क्या है? नो रिचार्ज, वो रिचार्ज नहीं हो सकता. इसमें रहता है एक जिंक कंटेनर. इट हैज द वन जिंक कंटेनर. दिस इज अ जिंक कंटेनर. और इसके सेंटर में रहता है एक ग्रेफाइट रॉड. दिस इज द ग्रेफाइट रॉड. This graphite rod is surrounded by the paste of MnO2. ये एक पेस्ट से सराउंडेड रहता है. That is what? MnO2. This graphite rod is surrounded by the paste of MnO2 plus carbon powder. और as it is surrounded by the paste of MnO2 and carbon powder. ये ग्रेफाइट का रॉड है, ये जिंक का कंटेनर है. दिस इज MnO2 प्लस विच पाउडर? कार्बन पाउडर. सो अब ये हमारा ऐसा है. ठीक है. और यहाँ पे पेस्ट है ZnCl2 की. ZnCl2 की. ठीक है. और पेपर स्प्रेसर से दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेपर स्प्रेसर. तो पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन ग्रेफाइट रॉड, पेस्ट ऑफ ZnCl2 प्लस NH4Cl, इसकी पेस्ट होती है. यहाँ पे ब्रास कैप लगी होती है. ब्रास कैप for good electrical contact. For good electrical contact. For good electrical contact there is a which cap? Brass cap. और ये कवरिंग होता है. ठीक है. So this is the dry cell or we can say liquid cell which is a primary cell. इसमें कंस्ट्रक्शन हो गया अभी जिंक एनोड. जिंक itself acts as a anode. Zinc container. Zinc has a tendency to donate 2 electron. And cathode पे है MnO2. MnO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn+4 and 4 electron, sorry, twice O di negative. There is Mn+4 and twice O di negative. This Mn4 positive is there. और ये Mn4 positive है. वहां पे MnO2 is converted into that. वहां पे NH4Cl. NH4Cl dissociate to form NH3 plus H positive plus Cl negative. ऐसे उसका डिसोसिएशन होगा. किसका? NH4Cl का. सो एंड दिस अभी यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले 2NH4Cl 2NH3 2H positive 2Cl negative. 2H positive accept 2 electron from 2H free radical and they share unpaired electron and they form the which gas? H2 gas. They form here the H2 gas. And as they form here the which gas? H2 gas. अब यहां पे क्या होता है कि this H2 gas released by this
रिएक्ट्स विद दिस H2 गैस, ये टॉई सोडा नेगेटिव, ये इन तीनों की रिएक्शन होती है। इसको भी दो ले लेंगे, इसको भी दो ले लेंगे, इसको हो जाएंगे 4। तो दिस H2 गैस प्लस Mn4 पॉजिटिव 2, 4O डाई नेगेटिव, H2 gas again decompose to form twice H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन। और ये ऐसा है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन ये खा लेगा और खा के क्या बनेगा, ये ट्राई पॉजिटिव, और ये भी बनेगा ट्राई पॉजिटिव। दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसने खाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने खाया। एंड दिस ऑक्सीजन कैरी डाई नेगेटिव, दिस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, and it combines to form Mn2O3। Mn2O3, Mn2O3 चला गया, H2 गैस ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसने खाया, एक इसने खाया, तीन ऑक्सीजन चले गए, बचा एक ऑक्सीजन, ये हो गया ट्वाइस H पॉजिटिव, वो डाई नेगेटिव, कंबाइन टू फॉर्म H2O। Overall, if you balance the reaction, 4O डाई नेगेटिव कैंसल, H2 गैस कैंसल, 2H पॉजिटिव कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कैंसल, 2Cl नेगेटिव इज देयर, 2Mn4 पॉजिटिव गेट कैंसल, व्हाट रिमेन्स देयर, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव गेट, ठीक, वो तो ऐसे ही हमने इसके लिखे थे, ठीक है। फाइनली इफ यू सी व्हाट हैपेंड, twice MnO2 plus twice NH4Cl form twice NH3 plus this combine to form Mn2O3, Mn2O3 plus one oxygen, it forms the H2O. Twice NH3 plus Mn2O3 plus H2O, and the 2Cl negatives are there, that 2Cl negative combine वो रह जाएंगे ऐसे, and they donate how many electron, H2, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, एक्सेप्ट, सो दो इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कैथोड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, दोनों को ऐड करो, यू गेट द नेट सेल रिएक्शन। How we can have the net cell reaction? Zinc is get converted into Zn dipositive, and this reaction twice MnO2 plus twice NH4Cl, two electron get cancel, gives twice NH3 plus Mn2O3 plus H2O and twice Cl negative. That twice Cl negative may combine with this and it can form the ZnCl2. इसका जो पोटेंशियल होता है E cell is 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का इसका पोटेंशियल होता है। थोड़ी बहुत और रिएक्शंस बाकी है, ईएमएफ सीरीज बाकी है, थोड़ा बहुत बाकी है। कल ही हम नया यूनिट चालू करेंगे और इसी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कल या परसों से आपका नया यूनिट चालू होगा, जिसका भी नाम आप फरमाएंगे हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी का हम कल देखेंगे। पुन्हा एकदा सर्वांना नवीन वर्षाच्या